हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस वर्ल्ड। तो कल हम लोग रात को फिर से लाइव मैं फिर से लाइव नहीं आ पाया था। उसका सिंपल सा रीज़न जो कि रात को क्या हो रहा है आजकल, ये वाईफाई मेरा डाउन हो जा रहा है और सुबह की प्रॉपर क्या बोलते हैं, देखा जाए तो आप देखोगे यहाँ पे फ्रेम जो होगा वो बहुत तगड़ा आता है। सुबह दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फ्रेम आ रहा है, ये फ्रेम आ रहा है, यहाँ पे तगड़ा आ रहा है। लेकिन अगर वही मैं शाम को करता हूँ तो ये 4000 6000 यानी 65% के आसपास रहता है। उसके जैसे ड्रॉप हो जाती है फाइल यूट्यूब पर और इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाता। लेकिन सुबह बढ़िया रहता है, तो इसी वजह से मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि शाम को लाइव की जगह सुबह ही लाइव रहा करूँ, अपनी 2 नई क्लासेस। और चलो आज हम प्रोबेबिलिटी अभी ख़त्म करते हैं पहले और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पास से। तो AI/ML ओपन करते हैं। ओपन CV वाली क्लास अभी कुछ देर बाद फिर से कंटिन्यू रखूँगा, ओपन CV भी। और साथ ही साथ हम इन सब के बाद अगर मैं खाली रहा तो जो प्रोजेक्ट पे काम करूँगा वो लाइव करूँगा, ठीक है। और ML बुक्स हमारी यहाँ है, मैथमेटिक्स फॉर ML। तो हम आ जाते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी वाली क्लास पे, जो कि हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। ये हो गया था गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पे हो गए थे, ये भी हो गया था। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स, कॉन्जुगेंसी एंड एक्सपोनेंशियल फैमिली, शायद यहीं से करना था मुझे। एक बार टॉपिक देखना पड़ेगा नोट्स में। सैम्पलिंग बचा हुआ है क्या? सैम्पलिंग फ्रॉम मल्टीवेरिएट, हाँ यहाँ से पढ़ना है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग फ्रॉम, ठीक है दोस्तों। तो रेडी, स्टडी एंड गो। तो सैम्पलिंग फ्रॉम लिख लेते हैं। अच्छा आज हमारा ये डे था $39, ये था 40 और आज है 41, डे 41 और डेट है 21/3/26। और थोड़ा सा हेडेक है बट ठीक है, हल्का हल्का भारी सा है सर। कल रात को ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से एक ऐप में बना रहा था कल रात को, और उसको बिल्ड कर रहा था, उसकी APK फाइल, और उसमें वो बार बार एरर दे रहा था बिल्ड फाइल। उसको सही करने में बहुत टाइम लग गया। चलो तो रेडी, सैम्पलिंग फ्रॉम मल्टीवेरिएट गॉसियन। और मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वी विल नॉट एक्सप्लेन द सबटलीटीज ऑफ रैंडम। इसे पढ़ा था क्या यार? ये हो गया था शायद, आई थिंक ये हो गया था, हाँ ये हो गया था ये मेरा, तो मैंने पढ़ ली थी ये बात। कॉन्जुगेंसी एंड एक्सपोनेंशियल फैमिली से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 11 conjugacy and the exponential family. So many of the probability distribution with names, what we find statistics textbooks were discovered to model particular types. लिंक चलो जाने दो, जब कोई बोलेगा तो देखूंगा। Textbooks were discovered to model particular types of phenomena. For example, we have seen the Gaussian distribution in section 6.5. The distributions are also related to each other in complex ways. Lemis and McQuiston. For a beginner in the field, it can be overwhelming to figure out which distribution to use. In addition, many of these distributions were discovered at a time that statistics and computation were done by pencil and paper. अच्छा भैया, तो
It is natural to ask what are meaningful concepts in the computing age. Efron, यहाँ देखो फूला फूला लग रहा हो, हल्का दर्द कर रहा है. Efron and Hesty 2016. In the previous section, we saw that many of operations required for inference can be conveniently calculated when the distribution is Gaussian. It is worth recalling at this point the desiderata. What is the meaning of desiderata? Ding 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 ding. अच्छा, ये है बुक वर्ड्स ऑफ लाइफ बाय मैक्स हेरमैन. कहाँ गया? It is worth recalling at this point the data of manipulating probability distribution in the machine learning context. वो प्लेसली emit noise the hassle hasta. अच्छा, desiderata मतलब है things desired. Latin. Prose poem by the American writer Max Ehrmann. The text was widely distributed in poster form in the 1960s and 1970s. चलो ठीक है, इसका मतलब है desired, things desired, desiderata, derata. For manipulating probability distribution in the machine learning context, there is some closure property. When applying the rules of probability, that is Bayes' theorem by closure, we mean that applying a particular operation returns an object of the same type. क्या है फिर से? It is worth recalling at this point the desiderata for manipulating probability distribution in the machine learning context. First, there is some closure property. When applying the rules of probability, that is Bayes' theorem by closure, we mean that applying a particular operation returns an object of the same type. As we collect more data, we do not need more parameters to describe the distribution. And since we are interested in learning from data, we want parameters estimation to behave nicely. It turns out that the class of distribution called the exponential family provides the right balance of generality while retaining favorable computation and inference properties. Before we introduce the exponential family, let us see three more members of named probability distribution: the Bernoulli, binomial, and the beta distribution. यहाँ पे है the Bernoulli distribution is a distribution of a single binary random variable x with the state of x is element of 0, 1. It is governed by single continuous parameters. Mu is element of 0, 1 that represent the probability x is equals to 1. The Bernoulli distribution per mu is defined as px or mu this and ex of mu. Vx हमारा ये है, where ex and vx are the mean and variance of the binary random variable. An example where the Bernoulli distribution can be used is when we are interested in modeling the probability of heads when flipping a coin. Which distribution, number of observation m number of observations हैं, and x is equals to 1, n is equals to 15 experiments. Remark: the rewriting above the Bernoulli distribution where we use Boolean variables as a numerical 0 or 1 and express them in the exponents is a trick that is often used in machine learning textbook. Another occurrence of this is when expressing the multinomial distribution. एग्जाम्पल एक ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मुझे लगता है वाला लिख लेना चाहिए.
एग्जाम्पल नहीं, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। एग्जाम्पल बिट, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा क्या है, बाइनोमियल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना चाहिए। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली के बारे में लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कब, नया 11th में। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन is distribution for a single binary random variable x with state x, capital X with state x is element of 0, 1, sorry, element 0 x, it is denoted, it is governed that represents the probability of x is equals to 1, and the Bernoulli distribution Ber mu is defined as distribution. The Bernoulli distribution Ber यानी कि mu is defined as p x of mu is equals to mu to the power x 1 minus mu or 1 minus x, where x is element of 0, 1 और ये 6.92 है हमारा, और e of x हमारा है mu और v of x हमारा है mu 1 minus mu 6.94, 6.93, where ex and vs are mean and variance of the random variable। तो ये तो हमें मालूम है। फिर ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, binomial distribution is generalization of the Bernoulli distribution to a distribution over integer। फिगर 6.10 यानी ये binomial distribution to a distribution over integers. In a particular, the binomial can be used to describe the probability of observing m occurrences of x is equals to 1 in a set of n samples from Bernoulli distribution, where p x is equals to 1, mu is element of 0 or 1. The binomial distribution यानी bin binomial n comma mu is defined as, चलो The binomial distribution is generalization। खत्म है यार इसके भी।
distribution is generalization of the Bernoulli distribution to a distribution over integer distribution over integers in particular the binomial can be used to describe the probability used to describe the probability of observing m occurrences of x is equals to 1 in a set of n samples, set of n samples from a Bernoulli distribution. Bernoulli distribution. The binomial distribution mu is defined as p m or n comma mu, or using n m mu to the power m 1 minus mu n minus m. यहाँ पे e और m क्या है, इस इक्वल्स टू n mu और vm हमारा है n mu 1 minus mu. 6.959697 mean and variance respectively. An example where the binomial could be used is if we want to describe the probability of observing m heads in n coin flip experiment. If the probability for observing head in a single experiment is mu. Beta distribution. Gamma.
gamma function, beta distribution. बीटा के बाद है कंजंक्सी, बस ये लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन. We may wish to model a continuous random variable on a finite interval, the beta. Model continuous random variable. Beta distribution is a distribution over a continuous random variable. Mu is the element of 0, 1, which is often used. Binary event, that is the parameter governing the Bernoulli distribution. Beta distribution. The beta distribution, beta alpha comma beta itself is governed by two parameters, which is alpha is greater than 0 and beta is greater than 0, and is defined as ये थोड़ा सा इक्वेशन जो है p alpha comma b is equals to gamma alpha plus beta upon gamma बार बार बन जाएगा gamma of alpha or beta mu alpha minus 1
अल्फा माइनस वन, वन माइनस म्यू बीटा माइनस वन, जहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा है, और वी म्यू इज इक्वल्स टू हमारा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, ये हमारा वी म्यू। और gamma function defined as, where gamma dot is the function, gamma function defined as p dot is the function defined as t 0 vector xt minus 1 exponential minus xt xt is equals to 0 t plus 1 t and t. Note that the fraction of gamma function neutralized by the distribution. Intuitively, gamma moves probability mass towards 1, either where beta moves probability mass towards 0. There are some special case, might be alpha is equals to 1, beta is equals to 1, alpha is equals to 1, beta is equals to 1, 0, 1. ये वाली वैल्यू येलो लाइन ये जा रही है, और अल्फा और बीटा दोनों ही 1 से छोटे हैं, तो गेट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द स्पाइक्स एट 0 and 1, दोनों 0 से छोटे हैं, यानी ये वाली वैल्यू ब्लू वाली 0 बड़ा है, यूनी मॉडल 1 से बड़े हैं, यानी ये पिंक लाइन ये वाली, और 1 से बड़े ये भी, एंड ए अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। ये कौन सा केस है? 1 से बड़ा है लेकिन अल्फा बराबर है बीटा का। Remark, there is a whole zoo of distribution which names and they are related in different ways to each other. It is worth keeping in mind that each name distribution is created for a particular region, but may have other applications. Knowing the reason behind the creation of particular distribution often allows insight into how to best use it. We introduced the preceding 3 distributions to be able to illustrate the concepts of conjugacy and exponential families. Conjugacy, according to Bayes' theorem, the posterior is conjugacy. Conjugacy
Base theorem, the posterior is proportional to the product of the prior and the likelihood. The specification of the prior can be tricky for two reasons. First, the prior should encapsulate our knowledge about the problem before we see any data. This is often difficult to describe. Second, it is often not possible to compute that posterior distribution analytically. However, there are some priors that are computationally convenient. Conjugate prior. A prior is conjugate for the likelihood function if the posterior is of the same form type as the prior. A prior is a conjugate. Prior is conjugate for the likelihood function if the posterior is of the same type as the prior. Posterior the same form or type as the prior Conjugacy is particularly convenient because we can algebraically calculate our posterior distribution by updating the parameters of the prior distribution. When considering the geometry of probability distribution, conjugate priors retains the same distances structure as the likelihood diagram. To introduce concrete example of conjugate prior, we describe in example the binomial distribution defined on discrete random variables and the beta distribution defined beta binomial conjugacy. Beta binomial conjugation. Consider a binomial random variable of x where p x n comma m is equals to n और x यहाँ पे mu to the power x1 minus mu x1 minus n minus x where x is equals to 0 1 dot n is the probability of finding x times the outcomes heads in n coin place. मतलब n coin को flip करते रहो to finding the probability of finding x times the outcome heads in n place, where mu is the probability of head. We place a beta prior on the parameter mu, that is mu beta a comma b alpha comma beta, where mu alpha comma beta is equals to हो जाएगा गामा अल्फा प्लस बीटा, गामा अल्फा अलग फिर गामा बीटा दोनों का प्रोडक्ट म्यू अल्फा माइनस 1 माइनस म्यू बीटा माइनस 1. If we now observe some outcomes, x is equals to h मतलब heads
That is, we see h heads in n coins flips. n coin flip पे h heads देखेंगे, flips we compute the posterior distribution on mu as directly proportional to n comma mu alpha comma b, यानी दोनों इक्वेशंस के बराबर. इनकम, अरे यार, म्यू x comma h, x is equals to h comma n comma alpha comma beta. तो ये पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p of x n comma m और ही p म्यू अल्फा comma बीटा के ना. हाँ सही है. तो इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो. अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा म्यू टू द पावर h 1 माइनस म्यू इसकी पावर n माइनस h, x की जगह h, और म्यू अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस म्यू बीटा माइनस 1. अब म्यू की पावर उसको सारी ऐड कर दो एक तरफ, म्यू म्यू म्यू. तो म्यू हो जाएगा हमारा एक पावर h प्लस अल्फा माइनस 1 वाला एंटी म्यू h प्लस अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस म्यू की पावर n माइनस h और प्लस बीटा माइनस नहीं हुआ ना. हाँ बीटा माइनस 1. ठीक है. likelihood conjugate prior positive Bernoulli beta हाँ ठीक है. वापस से बर्नौली कंजुगेट प्रायर पोस्टीरियर कॉसिन इनवर्स कॉसिन multinomial Dirichlet beta h plus alpha n minus h comma n minus h plus beta. Is our beta distribution as the prior, that is the beta prior is conjugate for the parameter mu in the binomial likelihood function. In the following example, we will derive as a result that is similar to the beta binomial conjugacy result. Here we will show that the beta distribution is conjugate prior for the binomial distribution. Beta binomial conjugate हमारा यहाँ पे है.
Let x is element of 0, 1 be distributed according to the binary distribution with parameter theta is equal to element is 0, 1, that is p x is equal to 1 or theta is this can be also previous. Let theta be distributed according to beta distribution with the parameters of alpha comma beta, that is multiplying the beta and the binary distribution we get. ये है p थीटा और x अल्फा कामा बीटा जो कि एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है p ऑफ x थीटा और p ऑफ थीटा अल्फा कामा बीटा। यहाँ पे n होना चाहिए था ना, अच्छा x है। ठीक, theta x1 minus theta 1 minus x theta alpha minus 1 minus theta beta minus 1. थीटा कॉमन निकाल, मतलब कॉमन नहीं, थीटा की पावर x फिर प्लस अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस थीटा 1 माइनस x और b प्लस बीटा माइनस 1, यही है बीटा माइनस 1 1 2 1 माइनस x बीटा बीटा अच्छा ये बीटा है, ठीक है, सही रखा हूँ मैं अपने हिसाब से। एग्जैक्टली मैं वैसा क्यों करूँ? अल्फा पी थीटा अल्फा प्लस एक्स कॉमा बीटा प्लस 1 माइनस एक्स। लास्ट लाइन इज द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर ऑफ अल्फा प्लस एक्स बीटा प्लस 1 माइनस एक्स, यानी कि all we table 6.2 list example for conjugate priors for the parameter of some standard likelihood used in the probabilistic modeling distributions such as multinomial, inverse gamma, inverse wizard, Dirichlet can be found in any statistical text and are described in Bishop. For example, the beta distribution is the conjugate prior of parameter mu in both the binomial and the Bernoulli likelihood. For a Gaussian likelihood function, we can place a conjugate Gaussian prior on the mean. The reason why the Gaussian likelihood appears twice in the table is that we need to distinguish the univariate from the multivariate case. In the univariate scalar case, the inverse gamma is the conjugate prior for the variance. In the multivariate case, we use conjugate inverse with shared distribution as a prior on the covariance matrix. The Dirichlet distribution is the conjugate prior of the multinomial likelihood function. For further details, we refer to Bishop. Recall the statistic of random variable is deterministic function of the random variable. For some example, if x is equals to x1 xn is a vector. We call that a statistic.
of a random variable is a deterministic function of that random variable. For example, if x is equal to this vector in your random variable that is x and mean sigma square, then the sample mean mu cap is equal to 1 upon m x1 plus dot dot x upon xn. The statistics Sir Ronald Fisher discovered the notion of sufficient statistics, the idea that there are statistics that will contain all available information that can be inferred from data corresponding to the distribution under consideration. In other words, sufficient statistics carry all the information needed to make inference about the population. That is, they are statistics that are sufficient to represent the distribution. 1 मिनट, ये 2 किलो 4 किलो सुनाई दे रहा है. मुझे बंद करना होगा. Okay. Yeah, statistics to represent this for a set of distribution parameterized by theta. Let x be random variable with distribution p x theta naught given an unknown theta naught. A vector phi x of statistics is called sufficient statistics for theta 0 if they contain all possible information about theta 0 to be more formal or contain all possible information. This means that the probability of x given theta can be factor indeed factor into a part that does not depend on theta. And the part that depends on theta only by phi x. The Fisher-Neyman factorization theorem formalizes the notation which illustrates theorem 6.1. ये वाला theorem without proof नहीं. को लिख लेता हूँ. Layman कैसे हो? Let x have probability PDF density function px theta and the statistics y of x are sufficient for theta if and only if px theta can be written in the form of 1
written in the form of px theta h x j theta y of x, where h is a distribution dependent of theta and g naught is a capital. g naught हमारा क्या है? Captures all the dependence on theta. Captures all the dependence on theta via sufficient statistics. Sufficient statistics y of x. hx का है distribution independent of theta. If p x theta does not depend on this, then phi x is trivially sufficient statistics for any function phi. The more interesting case is that p x theta is dependent only on phi x and not x itself. In this case, theta x is sufficient statistics for theta. phi x की बात कर रहा है. In machine learning, we consider a finite number of samples from distribution. One could imagine that for simple distributions such as the Bernoulli example, we only need a small number of examples to estimate the parameter of the distribution. We could also consider the opposite problem. If we have a set of data, a sample from an unknown distribution, which distribution gives the best fit? A natural question to ask is, we observe more data. Do we need more parameters theta to describe the distribution? It turns out that the answer is yes in general, and this is studied in non-parametric statistics. A converse question is to consider which class of distributions have finite dimensions. Sufficient studies, that is, number of parameters needed to describe them, does not increase arbitrarily ignorance. Arbitrarily, the answer is exponential family distribution described in the following section. Exponential family. There are three possible levels of abstraction we can have when considering distribution of discrete or continuous random variable. At a level 1, the most concrete and the end of the spectrum, we have particular name distribution with fixed parameter. For example, univariate Gaussian with zero mean and unit variance. In machine learning, we often use second level of abstraction, that is, we fix the parametric form, the univariate Gaussian, and infer the parameter from random data. Parameter from data, for example, we assume a univariate Gaussian mu comma sigma square, which unknown mean, mu and unknown variance sigma square. या unknown mean है या variance, and use the maximum likelihood fit to determine the best parameters mu comma sigma square. We will see an example of this when considering linear regression chapter 9. A third level of abstraction is considered families with distribution of distribution input. We consider the exponential family, the univariate Gaussian, in an example of members of the exponential family. Many of the widely used statistical models, including all the named,
models are member of the exponential family. They can all be defined into one concept. 1986, a brief historical anecdote. Like any concept in mathematics and science, exponential families were independently discovered at the same time by different researchers. In the years 1935, 1933, Edwin Pitman in Tasmania, Georges Darmois in Paris, and Bernard Koopman in the Illinois independently showed that the exponential families are the only families that enjoy finite dimension sufficient statistics under repeated independent sampling. Lehman and Casella. The exponential family is a family of probability distribution parameterized by theta is a winter part of the body of the form hx exponential theta 5x equals theta, where 5x is the vector of sufficient statistics. In general, any inner product can be used, and concreteness we will use the standard dot product here. Note that the form exponential family is essentially a particular equation of g theta phi x in the Fisher-Neyman theorem. The factor hx can be absorbed into the dot product term by adding another entry log hx to the vector of sufficient statistics, constraining the corresponding parameter theta is equal to theta 0, theta naught is equal to 1. The term a theta is the normalization constant that ensures that the distribution sums up or integrates to 1 and is called a log partition function. A good intuitive notion of exponential families can be obtained by knowing these two terms, log partition function and considering exponential families as distribution of the form of this. For this form of parameterization, the parameters theta are called the natural parameters. The first glance, it seems that exponential families are a mundane transformation by adding the exponential function to the result of the dot product. However, there are many implications that allow for convenient modeling and sufficient computation based on fact that we can capture information about in 5x. Gaussian as exponential family. Consider the univariate Gaussian distribution. Begin by using the
डिफरेंट। है गाइस, तो बाहर आ गए बकैती करने वाले लोग। भाग जाओ भाई, ये सबको आज ही मिला है कैसे भी बकवास करने को। 1/2 सिग्मा स्क्वायर x minus mu का whole square. Therefore, the univariate Gaussian distribution is a member of the exponential family with sufficient statistics of yx is equals to x square and natural parameters given by theta. 6.110 example 6.14 Bernoulli exponential family. 6.14 Bernoulli exponential family px गई जितिन। हाय भाई, आपका नाम ही पढ़ने में नहीं आ रहा है। मराठी एडिटिंग आकाश, सॉरी आकाश। हाय आकाश ही नाम है ना, ठीक है। 1 minus mu. Please, how can understand concept for machine learning? I learn about all machine learning, but how can get a job? मतलब मशीन लर्निंग के बारे में तुमने पढ़ लिया है, और जॉब की मतलब बोल रहे हो कैसे होगा, ये बोल रहे हो ना। सिंगल बेल जॉब के लिए तो यार कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, अप्लाई करो, और लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करते रहो जो भी तुमने किया वगैरह है। अप्रोच करो लोगों को जो तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड हो। हाँ, तो यही सारी चीज़ें हैं, है ना, कि जो भी तुमने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हो, ठीक है, या बनाए अगर हैं तो और क्या क्या बना सकते हो जिससे जॉब वगैरह मिल सकती हैं, ठीक है। मतलब कोई अच्छा तगड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, और अपने वर्क को लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करते रहो। लोग जो लिंक्डइन वगैरह पे रिलेटेड हैं, है ना, उनसे क्या बोलते हैं, अप्रोच करो, ठीक है। अप्रोच एक पर्टिकुलर वे में, मतलब एक सही तरीके से अप्रोच करना, ये नहीं कि भैया आपको जॉब चाहिए, ठीक है, अलग तरीका एक होता है।
लोगों से अप्रोच करने का कि भाई कैसे मतलब जॉब के लिए अप्रोच करना है वो। फिर उसके अलावा दूसरा जो है इंडीड वगैरह है ना, इंडीड वगैरह पे जा करके डेली पोस्ट मारो, सर सजेस्ट एम एल प्लीज एम एल प्रोजेक्ट। तो यार सजेस्ट क्या करना, नेट गूगल करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे नेट पे सर्च करोगे तो। फेक न्यूज़ डिटेक्शन वगैरह बना लो, एआई चैटबॉट, एआई ट्रेडिंग असिस्टेंट, कुछ भी बना सकते हो। फेस रिकॉग्निशन है ना, फेस रिकॉग्निशन वगैरह मेरे फ्रेंड्स वगैरह बनाए थे। ओके सर आई बिल्ड वन प्रोजेक्ट। कैसा प्रोजेक्ट बनाया तुमने, करते क्या हो, मतलब अभी क्या कर रहे हो, या किस कॉलेज में हो, और अगर कॉलेज में नहीं हो तो क्या करते हो, है ना, उस हिसाब से फिर आगे बताऊँ कुछ चीज़ें। मेरा फ्रेंड है तो उसने आईआईसी बैंगलोर से एआईएमएल से वो किया, क्या नाम है, एमएस एमटेक। ठीक है, उसके बाद उसने जॉब ली हैदराबाद में किसी कंपनी में, कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है अभी, स्टार्टअप कंपनी है, लेकिन पैकेज अच्छा खासा दिया। लेकिन उसके लिए उसने मतलब कंप्लीट होने के बाद कैंपस सिलेक्शन शायद नहीं हुआ था उसका, नहीं हो गया था, कैंपस से ही अप्लाई करने लगा था वो फॉर्म वार्म, जो कि पहले वो क्या बोलते हैं उससे था, बीटेक उसने आईटी सिलचर से किया। आईटी सिलचर से बीटेक करने के बाद बंदा टाटा कैंपस में जॉब किया 1.5 साल, करीब करीब 1.5 साल उसने जॉब किया। फिर उसके बाद वो गेट की तैयारी प्रिपरेशन करने लगा, कॉलेज 3rd ईयर लास्ट सेम AIML। ओके ठीक है, 3rd ईयर, मतलब तुम मतलब हाउस प्राइस प्रोडिक्शन, अच्छा हाउस प्रोडिक्शन किया हुआ है। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, 1.5 साल के आसपास उसने जॉब की टाटा कैंपस में। फिर लॉकडाउन के आसपास उसने छोड़ दिया, लॉकडाउन जैसे ही लगा है उसी के आसपास, मतलब लॉकडाउन की जस्ट लगने से पहले उसने जॉब छोड़ी थी, और उसके लिए मेडिसी का कोर्स लिया बंदे ने। ठीक है, मेडिसी का कोर्स लिया, जैसे ही दिल्ली में प्रिपरेशन करना चालू किया। अच्छा जॉब उसकी गुजरात में थी, दिल्ली आया, जैसे ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, वो हुआ क्या उसका कि लॉकडाउन लग गया। अब प्रॉब्लम बढ़ गई, वहाँ रहना भी दिक्कत, किसी तरीके से वो यहाँ आया, प्रयागराज में इलाहाबाद वापस आया। फिर उसके बाद यहीं से पढ़ाई स्टार्ट किया, यहीं से पढ़ाई वढ़ाई किया, ऑनलाइन वगैरह जो भी कर रहा था। फिर कई सारे फॉर्म्स वगैरह भरे, गेट वगैरह के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की आती है ना वैकेंसीज वगैरह, उसको भी भर रहा था। 2-3 जॉब निकली लेकिन उसको करनी नहीं थी। ठीक है, बट फिर वो बंदा समझ लो लगा रहा, एट लास्ट गेट का एग्ज़ाम निकला उसका। गेट का एग्ज़ाम निकलने के बाद उसने क्या किया कि मतलब उसके पास ऑप्शंस थे कि क्या बोलते हैं कंपनीज में अप्लाई कर सके। ठीक है, बट उसने अप्लाई करने की जगह क्या कर दिया, आईसी बैंगलोर में अप्लाई किया, एग्ज़ाम्स का भी जो रहा होगा किया, वो निकला उसका। और वो वहाँ पे मतलब समझ लो उससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्विच किया सीधा AIML पे फिर अच्छा खासा पैकेज पे, मतलब अच्छा खासा कह सकते हैं, मतलब उसका पैकेज 17 लाख के आसपास लगा उस कंपनी में, और अभी कर ही रहा है वहाँ पे, हैदराबाद में इसकी जॉब। तो प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे थे, प्रोजेक्ट वगैरह उसने अच्छे से किए थे। तो प्रोजेक्ट अच्छा, वहाँ तो कॉलेज की बात हो गई। लेकिन अगर आप मान लो कि कॉलेज वगैरह को इग्नोर करो, ठीक है, आप सिर्फ अगर देखो अपनी स्किल्स पे काम करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे बना के रखो, जिससे कॉलेज में जब आप अपना रिज्यूमे भेजो किसी को, दिखाओ किसी को, तो वो आपको एक बार ना देखे कि हाँ भाई बंदा है, स्किल्स हैं, है ना। तो बना के रखो और नॉलेज भी रखो उस बारे में, जो भी चीज़ कर रहे हो। मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ AIML। बाकी मेरा जो कोर था पहले वो था फुल स्टैक डेवलपमेंट। थोड़ा थोड़ा मैं भी सोच रहा हूँ कि मतलब सोच कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ आगे। और आपने तो वैसे भी AIML करके रखी है, तो मैं उसमें ज़्यादा कोई राय तो दे नहीं सकता, जितना मुझे अंदाजा है मैं उतना ही बता सकता हूँ। 1 - x
और पेन सही चल रहे हैं। कॉलेज 3rd ईयर लास्ट सेमेस्टर है। कहाँ से भाई? दिस कैन बी रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। आकाश भाई किस कॉलेज से हो? log of mu x 1 minus mu 1 minus x। पुणे पुणे पुणे। exponential of n log n। GSPMNST बढ़िया है, लगे रहो। log mu minus x टाइम मत वेस्ट करो, मेन अपने स्किल्स पर ध्यान दो। जॉब वॉब का क्या है, जॉब वॉब तो हो जाएगी, लेकिन तभी होगी ना जब स्किल्स रहेंगे। स्किल्स कब होंगी? जब तुम अपने स्किल्स पे टाइम दोगे। यहाँ सब के लिए है वो, मतलब मेरे लिए भी। इवन अगर मैं टाइम दूंगा तो मेरा भी कुछ ठीक होगा। मैं स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ अपने किसी और काम के लिए, मतलब कि अपनी कंपनी के लिए, अपनी खुद की प्रोजेक्ट्स के लिए, जो मुझे 1 minus mu plus log 1 minus mu। Okay, the last line can be identified as being in exponential family form by observing that hx is equals to 1। hx is equals to 1। हल्के चल रही है यार। log mu 1 minus mu theta of x is equals to x where theta is equals to minus log 1 minus mu log 1 plus exponential of theta। Relation between theta and mu is invertible, so that mu is equals to 1 upon 1 plus exponential of minus theta is equals to 1 upon 1 plus exponential of minus theta। Relation is used to obtain right equality. The relationship between the original Bernoulli parameter mu and the natural parameter theta is known as the sigmoid logistic function. Observe that mu is element of 0, 1, but theta is element of r, and therefore the sigmoid function squeezes a real value into the range 0, 1. This property is useful in machine learning. For example, it is used in logistic regression Bishop 2006 as well as अभी एक you know stuff never always। कौन है भाई? इंडिया। दोबारा कॉल आएगी तो देखा जाएगा। फिर आ रही है, सॉरी। वेट दोस्तों, किसी की कॉल आ रही है।
Hi everyone. Okay, तो कहाँ पे थे हम लोग? The property is useful in machine learning, for example, logistic regression, as well as non-linear activation function is a neural network. It is often not obvious how to find the parametric form of conjugate distribution of particular distribution. For example, provide a convenient way to find conjugate pairs of distributions. Consider the random variable x is a member of exponential family. Recall the exponential family form of binary distribution 6.1. Recall the binary distribution P x x p x 1 minus plus 1 minus 1. The canonical conjugate pair has a form. The canonical conjugate pair has the form P of alpha comma beta is equals to mu 1 minus mu exp alpha log mu 1 minus mu plus beta plus alpha log 1 minus mu minus xc log. Gamma is equals to have alpha comma beta plus alpha power t or hc mu by 1 minus mu. Equation that simplifies to p alpha comma beta is equals to exponential of alpha minus 1 log mu plus beta minus 1 log 1 minus mu minus ec alpha comma beta. Non-exponential family form gives which we identify as a beta distribution. Assume that beta distribution is a conjugate pair of binary distribution and so that it was indeed a conjugate pair. It is in this example we derived the form of beta distribution by looking at the canonical conjugate pair of the binary distribution as the constant form, exponential form. As mentioned in the previous section, the main motivation of family is that they are finite distribution are easy to write down, and the conjugate distributions also come from exponential family. From an inference perspective, maximum likelihood estimation behaves nicely because of speculation. Empirical estimates of sufficient statistics are optimal estimates of population values in statistics. The found likely function is a concave, allowing for efficient calculus to be found. Change of variable inverse transform. It may seem that there are very many known distributions, but in reality, the set of distributions for which we have is quite limited. Therefore, it is often described how transform random variable is distributed. For example, assuming that x is a random variable distributed according to the univariate normal distribution,
What is the distribution of x square? Another example which is quite common in machine learning is given that x1 and x2 are univariate standard normal. What is the distribution of x1 by 2? One option to work out the distribution is to calculate mean and variance of x1 and x2 and then combine them. As we saw in section, we can calculate the mean and variance of resulting random variables when we consider a fine transformation of random variables. However, we may not be able to obtain the function. We'll be explicit about random variables and the values they take. Hence, recall that we use capital letters x, y to denote random variables and small letters x, y to denote the values in the target space T that the random variables take. We will explicitly write PMFs to discrete random variables x as this continuous random variable x. The PDFs is written as here, CDF is written as f. We will look at two approaches for obtaining distribution transformation of random variables. Direct approach, and a change of variable approach. Two approaches. Direct approach using the definition of cumulative CDF or change of variable approach that uses the chain rule of calculus. The change of variable approach is widely used towards recipe of attempting to compute the resulting distribution due to transformation. PMFs and an invertible function. We will consider the transformed random variables. This with this py plus small y plus transformation interest by inverse. Here we can observe that inverse y, therefore the discrete random variable transform directly change the invisible event with the probabilities appropriately transformed. Distribution function. The definition of CDF's fx px is less than or equal to, and the fact that random variable, finding the CDF and differentiating the CDF fy y to get help PDF. Just inverse definition of CDF fx y to the power 1 by 2. अब fx की वैल्यू हमारे पास है 3xt स्क्वायर, तो y to the power t xt dt हो गया t. अब t की वैल्यू पुट करोगे t इक्वल टू y की पावर 1 by 2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 by 10 3 by 2 आ जाएगा, y इक्वल टू 3 by 2 आ गया, जो कि इसके बीच होगा y की वैल्यू। therefore CDF for y इक्वल टू y 3 by 2. to obtain the PDF we differentiate the CDF, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, d by d 3 by 2 आगे और 3 by 2 माइनस में 1 by 2, जो कि हमारा ये आएगा, मतलब ये हो गया
In example, we consider strictly monotonically increasing function of fx 3x squared. This means that we could compute an inverse function. In general, we require that the function of interest is as the inverse of its result can be obtained by considering the cumulative distribution function fx of x random variable x and using the transformation ux. This leads the following theorem. Random variable with a strictly monotonic distribution function fx of by defining fx of x as a uniform distribution. Known as 6.15 ऊपर था probability integral transform and it is used to derive ये वाला जो px mu is equals to exponential x log mu 1 minus mu plus log 1 minus mu वाला जो था वो हमारा क्या है probability integral transform and it is used to derive algorithms for sampling from distribution by transforming the result of sampling from a uniform random variable the algorithm works for the first generating samples from the uniform distribution, then transforming it by the inverse CDF. Assuming this is available to obtain a sample from desired distribution, the probability integral transform is also used for hypothesis testing whether a sample comes from a particular distribution. The idea that output of a CDF gives the information also forms the basis of Kopler's change of variable. The distribution function technique is derived from first principle based on the definition of CDFs and using properties of inverse differentiation and integration. This argument from first principle relies on two facts. We can transform the CDF of y into expression that is a CDF of x. We can differentiate the CDF to obtain the PDF. CDF को differentiate करो PDF पाने के लिए. Let us break down the reasoning step by step. With the goal of understanding the remark more general change variable across theorem 6.16, the name change of variables ये come from idea of changing the variable integration when faced with a difficult integral for univariate function. We use the include integration. Changes differential to the equations. This is that is by considering by submitting the argument inside the integral right hand side of becomes f of g f of x by pretending that the term du can be approximated by du. Univariate and variable x and invariant invertible.
Recall that we assume that this to be including function and decreasing function. It turns out that we have a negative sign and we follow the same derivation. This is called a change of variable technique. The term this unit in this format unit will change that language. The continuous case requires more because this for the density function does not have a description of property event involving the so therefore it's the key will be studying the change of variables. Theorem 6.1. Let fx of the variable f of x be the value of the probability density of the multivariate continuous connected random variable x is the vector function with the value function. Y is equals to u of x is differentiate all values within the domain of x or all x, then for corresponding values of y, then values of y, the probability density of y. अरे यार The theorem looks intimidating at the first glance, but the key point is that the change of variable, multivariate, random variables follows the procedure of the invariant changes. First, we need to work out the density f, then we calculate it. ठीक है दोस्तों, बस यहीं तक क्लास ओवर करते हैं। मतलब अभी के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, बाकी मिलेंगे अब कुछ देर बाद ओपन सीवी को लेकर के। अभी थोड़ा तो चाहता हूँ, मेरी माता श्री बुला रही है। बाय बाय।